Now, in our last lecture, we have understood regarding contract of guarantee. And we understood that in contract of guarantee, how many parties used to be there, how many agreements are happening, what are various provisions. Based on that, the liability is decided that who will be paying the liability. Now, today we are going to understand one more contract, which is again special, and it is similar to contract of guarantee. Contract of guarantee is covered under section 126, whereas contract of indemnity is covered under section 124. This thing you have to keep in mind, the section. Contract of guarantee was covered under section 126. Here, contract of indemnity is covered under section 124. Now, first we have to understand the meaning of indemnity. As far as the word guarantee is concerned, you were aware about the word guarantee because that is a very common word which we are using every now and then. But the word indemnity, we are not using very frequently. So it is very much necessary to understand the term indemnity. Now, before explaining the term indemnity, I'm just giving you one example. Let us say there is one Mr. A who has lost his job because of this lockdown. Right now, he's not having any source of income, and there is no money at all, in his home to buy even the routine things or the the daily livelihood things. So he is going to Mr. B, who is a grocery shop owner, and A is asking that, can you give me the grocery of 1 month on credit basis? Because now I don't have money, but I'm searching for the job. The moment I'll get the job, I will give you the money of the 3 months. Right? So it's a very pathetic situation. A is requesting B that, can you give me some groceries on credit basis for 3 months? Now B is saying that even you have not cleared the last month's bill, right? And if I give grocery like this to everyone, then one day will come, then I have to borrow the things from others, and I have to take the goods on credit basis. This is what B is saying. Now C is sitting over there, and he knows Mr. A very well. He is a good friend of Mr. A. C is seeing everything, and he knows that Mr. A may not ask for money from anyone, right? He will be keep hungry, or he will make his family also stay hungry, but he will not ask any friend to give money and all. So A has gone from that particular shop because B refused. Now C is telling B, listen carefully, C is telling B that, why you have not given grocery to that particular poor fellow? Now you deliver the goods at his home. You say that he will be paying money after 3 months. And if he is not paying you the money, I will pay to you. Right? What C is saying, that if A is not in a position to pay you money after 3 months, whatever he is promising, then I will pay you. I'm promising you that because of me or because of anyone, you will not suffer the loss. This is the promise which is made by C. Right? Now you compare contract of guarantee and contract of indemnity. In contract of guarantee, again, we were having three parties, A, B, and C. A was debtor, B was creditor, and C was a surety. Now here, B told A that I will give you the loan only when somebody is taking the responsibility. If someone is taking your guarantee, then I will be giving you the money. So what A has done, A requested C to be his surety so that he can get loan from B. A approached C, he requested him to be the surety, and C agreed. Right? So in contract of guarantee, there was a request made by debtor to surety. But in case of indemnity, what has happened? Over here, A did not request C. In fact, A has gone away from that particular shop. But C came by himself in the picture, and he said that I am taking the guarantee. If any loss is happening to you, I will pay that. That is called as contract of indemnity. I hope you are understanding the difference between these two, guarantee and indemnity. So in indemnity, when one person is promising to another person that because of me or because of any other person, you will not suffer a loss. And if you are suffering from loss,
I will make the losses good. What promise is making? I will make the losses good. यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये प्रॉमिस करता है कि मेरी वजह से या किसी और के वजह से जो भी तुम्हें नुकसान होगा मैं भर के दे दूंगा. दैट इज द प्रॉमिस व्हिच इज मेकिंग. दैट इज इंडेमनिटी. एंड बेस्ट लाइन, आपको अगर आपको इसका मीनिंग याद रखना है तो इतना याद रखना है, मेरी वजह से या किसी और की वजह से अगर तुम्हें कोई नुकसान होगा मैं भर के दे दूंगा. ये जो अश्योरिटी है, दिस इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी. एंड दिस विल अफेक्ट मिस्टर बी. बी ने, जिसने ए को वापस लौटा दिया था शॉप से, अब बी के मन में आएगा कि नहीं, अगर सी उसकी गारंटी ले रहा है और सी मुझे अश्योर कर रहा है कि वो मुझे पैसे दे देगा, then why should not I give grocery to him? And he will give grocery to A. And let us say after 3 months, A is not in a position to return the money or to pay the bills and all, then C will pay. That is indemnity. That is called as indemnity. I hope you have understood that. You can put yes just to make me sure that you are following what I am saying to you. The difference between indemnity and okay, I'm getting the answers yes in the chat box. Okay. So I'm proceeding further to understand now what is given as a definition and the contents. Now here, section 124 defines contract of indemnity as follows. As I told you, contract of guarantee is covered under section 126 and contract of indemnity is covered under section 124, right? This is 124. Now what it says a contract, sorry, by which one party promises to save the other. One party is promising to other to save from what? From loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person, right? He is promising that I will save you from the loss which can be caused to you because of conduct of me. That means the promiser is promising, no, that if any loss is happening to you because of me or because of anyone, I will bear it. मेरी वजह से या किसी और की वजह से अगर तुम्हें कोई नुकसान होगा तो मैं बचा लूंगा, मैं वो नुकसान भर के दे दूंगा. That is the meaning over here. So promiser means the person who is giving the indemnity, and the person who is receiving the indemnity is called as indemnity holder or indemnified, right? There are two parties in the case of contract of indemnity. One is a person who is giving the indemnity, so he is called as indemnifier. And the person who is receiving this type of indemnity is called as indemnity holder. ये आपको याद रखना है. Now as far as indemnity is concerned, many times this particular word is applied when we are writing something on the stamp paper. I'm just giving you one more example. See, as far as our university's rules are concerned, one student can do one course at a time. Mumbai University is following so many courses, but you can do one course at a time. You cannot do two or three, more than one course in under any stream. Now, you might have remember, or you must have remembered that when you took admission in FY BCom, we asked you to submit your original mark sheet and original leaving certificate, and that is still there with us. With us means it is with the university. It will come back, then it will return to you, right? Now original we have recovered from you. That means, wherever you have taken the admission, original you are supposed to give over there. That is, the way to protect such type of practice. Otherwise, what students can do, students will be taking admission in one college because original is not to be submitted. Then they may take admission in another college also because they're not asking for the original one, and student may be doing both the courses. That is also possible now. So university is not allowing such practice, right? Now let us say student have taken admission, he has cleared his graduation. Now again after graduation, student want to continue with the another course. Now after graduation also there are so many other post graduation courses which are offered by university. Again university says that you can do only one course at a time, you cannot join both the courses.
right? If you want to become a teacher, you have to have the degree of MCom and you have to have the degree of B.Ed as well. If you want to join teaching line, especially for junior college, so you have to have MCom as well as B.Ed. Now you may think that अरे अभी ग्रेजुएशन में इतने साल गए, फिर अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे 2 साल उसमें जाएंगे, फिर उसके बाद B.Ed के इतने साल जाएंगे, तो इससे अच्छा दोनों साथ में क्यों ना कर ले, MCom भी कर लेते हैं और B.Ed भी कर लेते हैं. Now here, when you will take admission in MCom, let us say, again you have to submit the original documents over there, and because that is not allowed to do take admission in more than one course, and then what you have done, you have applied for duplicate mark sheets, right? You are applying for duplicate mark sheet, saying to the college that I have lost my one mark sheet, original mark sheet, and I want duplicate one. Now in your mind, one unethical practice is going on, that you will be taking admission in MCom by giving the original mark sheet. Then you will apply for duplicate mark sheet, and that mark sheet you will submit to university to take the admission in B.Ed as well, and that is not allowed. So when you will approach to college that issue me duplicate mark sheet through my university, then so many questions will come, that how you lost the mark sheet and all, and whatever you will say, it may be true also. Okay, it may be true that you actually might have lost the mark sheet. So what authorities will tell you that, okay, you make one FIR with police that you have lost your mark sheet. Then you give your promise on bond paper, on 100 rupees stamp paper, you write that whatever you are saying, it is true and correct. And if you prove wrong in future, then you are ready to take the punishments. So over here, you are taking the indemnity, you are giving the guarantee to the institution that if anything happens in future, you will be responsible for that. राइट तो आपने क्या किया, बॉन्ड पेपर पे लिख के दे दिया कि आप जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, आपकी सच में मार्कशीट गुम हो गई है और आपको एक नया मार्कशीट चाहिए, डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए. सो कॉलेज क्या करेगा, आपसे वो बॉन्ड पेपर ले लेगा, आपसे FIR की कॉपी ले लेगा और डुप्लीकेट मार्कशीट इश्यू भी कर देगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उस मार्कशीट को मिसयूज कर रहे हैं, यू आर वायोलेटिंग द रूल. लेट अस से इन फ्यूचर ये बात पता चल गई कि अरे ये एक स्टूडेंट MCom में भी रजिस्टर कर चुका है और B.Ed भी कर रहा है, दैट इज नॉट अलाउड. नाउ इन दिस केस, फर्स्ट द क्वेश्चन विल गो टू कॉलेज हु हैज इशूड 2 मार्कशीट, राइट? कॉलेज की तरफ पहले इशारा जाएगा कि उन्होंने 2 मार्कशीट इशू कैसे किए. अगर दूसरी मार्कशीट इशू नहीं करते तो वो प्रैक्टिस वहीं रुक जाती, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग यू? आर यू अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल? यहाँ पे क्या हो गया, एक स्टूडेंट ने जानबूझ के एक मार्कशीट ओरिजिनल, एक एडमिशन ले लिया, फिर एक डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए भी अप्लाई किया, पर यहाँ पे कॉलेज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा बिकॉज दैट स्टूडेंट हैज गिवन द इंडेमनिटी. उसने बॉन्ड पेपर पे लिख के दे दिया ना इंडेमनिटी, देन कॉलेज विल बी आउट ऑफ पिक्चर, देन एंटायर फोकस विल बी ऑन द स्टूडेंट. Student will get the punishment. He may be getting debarred for 3-4 years, or for permanently university may debar him because he has done a crime. Actually it is a crime when you are violating any rule, that is a crime. So when such things, you are giving it on stamp paper, that is the indemnity. You are giving the assurity that whatever is written over here, I am fully responsible for it, and if anything happens in future, I am taking the responsibility that you will not suffer from any loss. ये हो गई एक बात. कई बार ऐसा होता है ना, चोरी जो हो जाते हैं सामान किसी के भी, तो वो पुलिस को मिल जाते हैं, फिर प्रूफ नहीं रहता है कि ये हमारा ही चीज है. समझो मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया, आपका भी मोबाइल फोन चोरी हो गया, दोनों का मॉडल सेम है और पुलिस को एक फोन मिला है. पुलिस ने मुझे फोन करके बोला आपको शायद कांटेक्ट नहीं कर पाए या आप ट्रेसेबल नहीं थे, आपने भी कंप्लेन उसी पुलिस स्टेशन में किया, मैंने भी कंप्लेन उसी पुलिस स्टेशन में किया हुआ है. अब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि मेरा फोन चालू था, आपका फोन बंद था, आपको कांटेक्ट नहीं कर पाया. तो मैं गया वहां पे, फोन पड़ा हुआ था, तो पुलिस वालों ने कहा कि देखो हिंदुजा, एक तो तुम्हारा कंप्लेन आया था और एक दूसरा नारायण गुरु कॉलेज के स्टूडेंट का भी एक कंप्लेन आया है, सेम फोन है. अब ये फोन तो मिला है, लेकिन ये फोन किसका है हमें नहीं पता चल रहा है कि आपका है या वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का है. तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं ये मेरा ही है, तो मुझे पुलिस वाले क्या बोलेंगे, ठीक है
तुम ना एक बॉन्ड पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो कि ये ना तुम्हारा फोन है और तुम गारंटी लेते हो उसकी, कि अगर फ्यूचर में कुछ बात पता चली कि तुम झूठ बोल रहे थे तो हम नहीं उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी आ जाएगी। तो मैं वो लिख के दे दूंगा उनको स्टैम्प पेपर। और बाद में अगर आपको पता चला कि जो फोन मिला था वो आपका था और मैं लेकर आ गया, देन पुलिस बीच में नहीं रहेगी, आप मुझे कोर्ट में घसीट के लेके जाएंगे कि मैंने झूठ बोला था। तो जो भी आप स्टैम्प पेपर पे लिखते हो ना, वो सच होना चाहिए कभी भी। whatever you are writing on the stamp paper, it should be 100% right. And if you know that whatever you are mentioning, it is not 100% right and correct, don't sign that particular paper because it will put you in trouble in future. तो ये इंडेमनिटी होती है, इसको तो इंडेमनिटी बॉन्ड बोलते हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड, बॉन्ड मतलब अब किसी को आप बांध लेते हैं ना प्रॉमिस में कि ये तुम्हारा, अभी तुम बंध गए, अभी तो को छोड़ा नहीं सकते अपने आप को जब तक ये प्रॉमिस पूरा नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी बॉन्ड, और दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी। ओके, तो ये गारंटी से थोड़ा ज्यादा ही एडवांस्ड है। यहाँ पे आप अपनी आप से गारंटी देते हो किसी और को कि ये तुम्हारे लिए नुकसान नहीं होगा, अगर होगा तो मैं भर के दे दूंगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, here are some essential characteristics or points. Number of parties. There are actually two parties, right? The first party is the promiser, और इसको बोलते हैं इंडेमनीफायर। जो पहला पार्टी रहता है वो कौन रहता है? प्रोमिसर और इंडेमनीफायर, उसका नाम दिया है। देन द सेकेंड पार्टी इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड जिसको आपने प्रॉमिस किया हुआ है। तो देर आर टू पार्टीज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फर्स्ट वन इज प्रोमिसर और इंडेमनीफायर, and another one is indemnity holder. In case of contract of guarantee, there were three parties because agreement was happening between or among three parties. यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम लोगों ने ABC का एग्जाम्पल लिया, A is not the party at all because A did not request C. A ने C को थोड़ी ना रिक्वेस्ट किया था, C तो खुद ही आ गया ना पिक्चर में। तो एग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा था? दो लोगों के बीच में, B और C के बीच में। A घर पे आ गया था क्योंकि उसको मना कर दिया ना कि मैं तुम्हें ग्रोसरी नहीं दूंगा। तो एग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है? इंडेमनिटी दो लोगों के बीच में हो रहा है। एक है प्रोमिसर मिस्टर सी हु इज गिविंग द प्रॉमिस, एंड मिस्टर बी हु इज इंडेमनिटी होल्डर जिसके पास वो प्रॉमिस आया है। ओके, देन द नेक्स्ट इज लॉस। देयर शुड बी लॉस। if loss is not happening, then this particular contract of indemnity will not come in the picture. Otherwise this will be the valid agreement or contract which can be taken into the court, right? अगर लॉस हुआ तो समझो ए बी और सी, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, हो सकता है ए की जॉब लग गई नेक्स्ट मंथ में और उसने अपने सारे पैसे वापस कर दिए बी को, जो भी ग्रोसरी उसने लिया था, बिना ये जाने कि सी ने उसके लिए गारंटी ले लिया था। तो अगर ए ने पैसे चुका दिए तो अपने आप ही खत्म हो गया। लेकिन अगर ए ने पैसे नहीं दिए, देन लॉस इज हैपनिंग, देन दिस पर्टिकुलर इंडेमनिटी contract will go to the court and the justice will be given. Then the next is object lawful. That is very common thing. Any kind of agreement or contract which is happening, it should be having the lawful object. If it is having unlawful object, then indemnity will not work. For example, Mr. A ने मिस्टर ए का जॉब चला गया एंड ही वांटेड टू कंज्यूम सम ड्रग्स। ड्रग्स उसको कंज्यूम करने हैं और वो एक बंदे के पास जा रहा है कि यार मुझे ड्रग्स दे दो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ड्रग्स कंज्यूम करने हैं। और सी उसका बेस्ट फ्रेंड खड़ा है वहां पे, और बी ने कहा कि नहीं नहीं, बिना पैसे के तो मैं देने वाला नहीं हूँ, चल जा। तो ए बेचारा चला गया। अब सी गारंटी ले रहा है बी की, कह रहे उसको ड्रग्स क्यों नहीं दिए, उसको देना चाहिए, वो बेचारा इतना परेशान है, और अगर वो पैसे नहीं देगा ना तो मैं दे दूंगा। तो ये अगर आपने इंडेमनिटी किया है ना तो वो नहीं चलेगा, वो गलत काम के लिए आपने इसको सपोर्ट किया हुआ है। हाँ, उसको ग्रोसरी के लिए या जरूरत की चीजों के लिए अगर आप इंडेमनिटी दे रहे हो, देन इट इज वैलिड। Otherwise, if you are promising for the having some unlawful object, then this will not work. That will be unenforceable.
Then the next is contract, means this contract can be express or it can be implied. Many a times, you are using the words. Generally ऐसा ही होता है, words use होते हैं, but many a times, even the action, or the situation is also expressing that the contract is happening. वहां पे समझो जो B है, B ये जानता है कि C A का बेस्ट फ्रेंड है. ओके, तो समझो ए जब ग्रोसरी मांग रहा था बी से, तो बी ने क्या किया, सी की तरफ देखा कि अरे ये तो फिर से उधार लेने आ गया, और सी ने ऐसे इशारे से कहा, ऐसे इशारा किया कि दे दो. तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट, बिकॉज वर्ड्स हैव नॉट बीन यूज्ड बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल्स because the action has made the the expression of the wordings, and over here B is having the assurity that C has already taken the responsibility, and if there will be any loss, that will be borne by Mr. C. So this contract can be express contract where you are using the words, or it can be implied contract where you are not using the words but you are making the use of some action, some gesture, the conditions and surroundings and all. Then no exhaustive. No exhaustive means it is not in a very detailed manner. In a very detailed manner. That means, let us say A आया ग्रोसरी शॉप में. ओके, उस दिन ग्रोसरी शॉप वाले ने मना कर दिया. C वहां पे मौजूद था और C ने B को कहा कि बेचारे को ग्रोसरी दे दो, मैं पैसे दे दूंगा. यहां तक बात ठीक हो गई. दूसरे दिन C वहां पे नहीं है, शॉपकीपर के पास नहीं है C. ए आया या ए की वाइफ आई बी के पास और कुछ महंगी चीजें खरीदने के लिए आ गई. पैसे हैं नहीं लेकिन महंगी चीजें खरीदते आ गई. अब बी अगर ये सोचता है कि जैसे कल सी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो आज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, तो गलत होगा. क्योंकि एक सेलर को तो अपना बिजनेस चाहिए, वो पैसा चाहे ए दे या सी दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर बी ने उसे महंगी चीजें दे दी कि बहन जी लेके जाओ, कोई बात नहीं, आपका जो पहचान वाला है ना सी, उसने बोला हुआ है कि वो मुझे पैसे दे देगा, वो लेके चली गई वहां से. अब मिस्टर बी सी को शाम को फोन करता है कि भैया तुम्हारी जो फ्रेंड है ना, उसकी वाइफ आज बहुत महंगी चीजें लेके गई है, 15-20 हजार की, वो तुम्हें कब कब दोगे तुम. तो सी बोलता है अरे मैंने उसकी गारंटी कहाँ ली थी, मैंने कहाँ बोला, उसकी ग्रोसरी का 1500 का जो बिल था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी ना, बाकी चीजों की थोड़ी ना ली थी. राइट, तो दैट इज कॉल्ड एज नो एग्जॉस्ट. मतलब ऐसा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करना है कि हाँ आज अगर उसने हाँ बोल दिया है तो बाकी की चीजों के लिए भी अपने आप ही वो भर के दे देगा. नो, in no exhaustive, that is not in very detail, that is only for the specific purpose, for the specific amount and for the specific situation. There is no continuity of that. That is meaning of no exhaustive. Then essentials of contract, we have discussed 10 essential conditions of valid agreement and valid contract. You remember that? And the same thing is applicable for contract of indemnity also. तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए है क्योंकि उसमें एसेंशियल कंडीशंस के साथ साथ और भी नई कंडीशंस को फॉलो किया जाता है. मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ. इज इट क्लियर टू यू? Okay, now I'm just showing you one video clipping which will be showing you the distinction between contract of guarantee and contract of indemnity. So let me turn on the volume and that will be coming in front of you. 1 second.
Okay, so I think you have understood the meaning as well as the distinction between contract of guarantee and contract of indemnity. So with this note, I just stop sharing the screen.